तो चलिए चलते हैं 3.39A की तरफ, राइट, बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कैप फ्लोर कॉलर। एक बार देखते हैं क्या पूछ रहा है सम हमसे। XYZ Inc. issues £10 million floating rate loan on July 1st, 2016 with resetting of coupon rate every 6 months equal to LIBOR plus 0.5 basis plus 50 basis points, that's 0.5%. XYZ Limited is interested in a collar strategy, right? बेसिकली अगर आप लोन उठाते हो तो आपके लिए कैप इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, बट यहां लिखा है लोगों ने दे आर इंटरेस्टेड इन अ कॉलर स्ट्रेटजी बाय सेलिंग अ फ्लोर एंड बाइंग अ कैप। ठीक, हमने जो कॉलर किया था बहुत सिंपलिस्टिक मैकेनिज्म वाला था, एक बेस आपको नॉलेज दे दिया कि दोनों पार्टी ने एग्री किया है, इफ इंटरेस्ट रेट गोज अप वन विल पे, इफ इंटरेस्ट रेट गोज डाउन द अदर विल पे, राइट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, लेकिन अगर मैं मुझसे आप डायरेक्ट पूछे that what strategy should be taken up by the borrower, simple cap, interest rate goes up and he can take the advantage of the cap, right, in order to keep his interest payouts in check. So collar strategy by selling a floor and buying a cap. XYZ buys the 3 years cap and sell 3 years floor as per the following details. तो आपने कैप बाई किया है, मतलब क्या है, इफ द इंटरेस्ट रेट गोज अप you can take money from the cap seller and reduce your interest payout, control your interest payout, and sell a 3 years floor, yani you have sold a floor, matlab someone would have bought a floor, right? Who he would be an investor, right, who is worried about the falling interest rate, so he has purchased a floor from you. If in case the interest rate goes down, you have to pay to the other party. If the interest rate goes up, nothing to worry, right? As a seller, it's nothing to worry, right? As I told you, floor is like a put instrument. So if you are selling a put, yaad karo, if you are selling a put, means you are selling a right to sell, right? To whom? To the other party. So if the price goes down, he will exercise his right, correct? So aapko payout aayega. So we have sold a floor, yani if the interest rate goes down, we would have to pay money to the buyer of the floor, the investor, who will lose on account of fall in interest rate. Remember, selling a put, selling a right to sell, right? You have given the right to the other party that he can sell it to you. When he'll exercise it only if the prices go down. Same thing, selling a floor as per the following details. So notional principal amount $10 million नहीं है, £10 million है ये। रेफरेंस रेट 6 months LIBOR, स्ट्राइक 4% for the floor, 7% for the cap. So as we are buyer of the cap, so interest rate goes above 7%, we'll take the money. If it goes below 4%, obviously we have to pay the money as we are seller of the floor. Premium 0, yani by buying a cap, we had to pay money. From selling a floor, we got money. They would have netted out. यहाँ लिखा ही हुआ है भाई, premium paid for cap equals to premium received for floor. Using the following data, you are required to determine. तो हर 6 महीने पे, तो 1 जुलाई 2016, तो 6 महीना यानी 31 दिसंबर, राइट? जुलाई पूरा गिन लीजिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 31 दिसंबर पे रेट रीसेट हो जाएगा for the next cycle, ठीक है। As we have witnessed in our previous sum also, ये लोग ने वो रीसेटिंग में फिर से गड़बड़ कर दी है। Using the following data, you are required to determine effective interest paid out at each reset date, the average overall effective rate of interest per annum, right? ये लोग ने क्या देखो क्या किया इन लोगों ने। सबसे पहली बात, I want you to understand the sum. When this loan was taken, what was the rate of interest? It is not known. कहीं भी सम में दिया नहीं है, ठीक है। आप चेक करते रहो, मैंने ऑलरेडी बहुत बार चेक कर लिया है, ठीक है। So एक्चुअली ये सब डेट्स 1 अप पुश होनी चाहिए। क्यों समझा रहा हूं आपको। 1 जुलाई 2016 यानी 3 इयर्स है। लोन क्लोज कब हो रही है हमारी?
16 to 17, 17, 18, 18, 19. So 31st जून 2019 पे लोन क्लोज हो जानी चाहिए हमारी, ठीक है, 30th जून सॉरी 2019 पे लोन क्लोज हो जानी चाहिए. सो दिस रेट इज बेसिकली ऑफ नो यूज. यहाँ तो लोन क्लोज हो रही है, एंड व्हेनेवर द रीसेट हैपेंस दैट इज एप्लीकेबल टू प्रोस्पेक्टिव, राइट, एंड नॉट रेट्रोस्पेक्टिव. तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव. तो ये पूरा गड़बड़ हो गया फिर से, राइट. सो दिस डेट 31st December 2016, right, should have been 1st July 2016, ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट was 6%. वैसे करके इन लोग को करना था ये, ठीक है. सो बेस्ड ऑन 6%, 31st 12/2016 को फर्स्ट सेटलमेंट होगा. ऑब्वियसली नाइदर द फ्लोर नॉट द कैप वुड बी एक्टिवेटेड, राइट. कैप एक्टिवेशन के लिए इट हैज टू बी ग्रेटर देन 7%. फॉर फ्लोर एक्टिवेशन इट शुड बी बिलो 4%. सो नाइदर इज हैपनिंग. तो वो ये गड़बड़ हो गई फिर से, राइट. व्हाट दैट डन इन द November 13 सम फॉर 6 months, फिर से ये हो गया, ठीक है. तो ये मैंने आपको पहली बैकग्राउंड दे दिया है. चलिए शुरू करते हैं आंसर के साथ. पहले गिवन लिख लेंगे. यू डोंट रिमेंबर द कॉलर थिंग, एक बार वो एग्जांपल चेक कर लो, भावेश सर, दलबीर सर वाला, राइट. तो जहां अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन व्हेन आई हैव सॉल्व्ड इट आई हैव टोल्ड यू हु इज एन इन्वेस्टर, हु इज अ बोरोवर, काइंड ऑफ अ थिंग. पूरा आपको एक सीन दे दिया है मैंने, राइट. वो आप एक बार फिर से चेक कर लो. अगर फ्रेश ही होना चाहिए, अभी आपने पढ़ा होगा वो, फिर भी यू कैन जस्ट मेक वन गुड क्विक रेफरेंस टू दैट, ठीक है. ये हम लोग कैप बाई कर रहे हैं, फ्लोर सेल कर रहे हैं, ठीक है. नोशनल अमाउंट pound 10 million. Cap strike 7%. Who are we? Buyer. क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो एज अ बोरोवर वी लूज मनी, हेंस वी नीड टू बाय अ कैप एंड वील एक्सरसाइज द कैप एज इंटरेस्ट रेट गोज अबव द पेग्ड रेट, दैट इज द स्ट्राइक रेट, ठीक है. फिर फ्लोर स्ट्राइक 4%. Who are we? We are the seller, right? So some investor would love to purchase the floor and we have sold it. If the interest rate goes below 4%, he'll be in a detrimental position. We have to pay to him. Obviously, हमारा फायदा कहाँ से होगा? हमारी borrowings से, because our borrowings would start costing less, right? And we would pay it to the floor buyer, ठीक है. But as if you are a plain borrower, there's no point doing a mix of cap and floor. There's no point doing it, right? अगर आप plain borrower हैं. Time period 3 months or 3 years. Reset every 6 months, ठीक है. जैसे मैंने बताया, this should be on 1st July 2016, right? And the settlement for that would take place on 31st December 2016. Obviously 31st December 2016 को नया रेट आएगा जिसका सेटलमेंट होगा 30th June 2017, so on and so forth, right?
डेट सब एक ऊपर पुश हो गई होती और दिस वुड बी इनिशिएशन इंटरेस्ट रेट, इनिशियल इंटरेस्ट रेट, तो हो जाता काम कंप्लीट. सो दिस बिट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर. आई विल जस्ट गिव अ फुटनोट टू क्लैरिफाई दैट. ठीक है. First part, computation. On each reset date. मैं अपने हिसाब से करेक्ट हिसाब से ही सॉल्व करूंगा इसको. लीबर्स, एप्लीकेबल लीबर, मैं मान के चल रहा हूं दिस वाज ऑन 1 जुलाई 2016. ये एप्लीकेबल लीबर था. ठीक है. That's why I have not written reset date. I have just written date. ठीक है. So this would be applicable from, ये फर्स्ट का है. ये गड़बड़ सॉल्व करने में ज्यादा मेहनत लगती है. So 6% है प्लस 0.5 अपन को भरना है क्योंकि हम लोग बोरोवर हैं. ठीक है. तुमको यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, पहले एक डेज भी लिखना पड़ेगा अपन को इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए. कैप पे ऑफ, फ्लोर पे ऑफ, नेट इंटरेस्ट. पहला कितना है, जुलाई से, जुलाई, अगस्त, लेट्स 31 प्लस 31, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 184 डेज. राइट. इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, लीबर प्लस हाफ, ये याद रखना, 50 बेसिस पॉइंट्स यानी 6.5% के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे फॉर 184 डेज. और ईयर कितने का है, हैव दे स्पेसिफाइड? नो. सो वी कैन कंसिडर एनीथिंग 360 और 365. I'll consider it as 365. तो 365 के हिसाब से £10 million, right? That's 3,27,671. Will there be anything that we have to take on account of cap? No. Anything to pay on account of floor? No. Net interest, pounds, right? फिर क्या होगा, नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, 7.5. बेसिकली दैट शुड बी our first reset at 31/12/2016, applicable from 31/12/2016 to 36/2017. Right. So I'm saying it time and again, so I want it to be etched correctly in your understanding.
Has the LIBOR breached the cap strike of 7%? Yes. सबसे पहले नंबर ऑफ डेज कंप्यूट कर लेते हैं. जनवरी, फरवरी लीप ईयर नहीं था तो 28, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 181 डेज. ठीक है. अब यहाँ इंटरेस्ट क्या आएगा? हम लोग पे करेंगे 7.5 प्लस 0.5 दैट्स 8%. $3,96,000 712. कैप पे ऑफ होगा, 100% होगा. इन्वेस्टर तो हमको पूछने आने वाला नहीं है बिकॉज फ्लोर स्ट्राइक इज एट 4%, कैप स्ट्राइक दैट वी हैव परचेज्ड इज 7%. तो हमको 0.5% बेनिफिट मिलना चाहिए, हाँ ना? कितना मिलेगा बेनिफिट? 24,790. नेट कितना? ये इनफ्लो है, कैप पे इनफ्लो है. सो आवर आउटफ्लो वुड रिड्यूस एंड बिकम 3,71,917. फिर नेक्स्ट, फिर बेटा 36/2017 जो है वहां नया रेट आएगा. क्या रेट आएगा? 5% आएगा, एप्लीकेबल फ्रॉम 36/2017 टू 31/12/2017, दैट इज 6 months. कितना है ये? डे कैलकुलेट करो, अगेन लीप ईयर नहीं है तो 184 ही आएगा. ठीक है. और लीप ईयर होगा तो भी कहां से अफेक्ट करेगा? बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6th month, राइट? तो 5.5% के हिसाब से कितना आ जाएगा? 2,77,260 pounds. 2 lakh सेटलमेंट्स कुछ नहीं होंगे. बट आवर इंटरेस्ट कॉस्ट has fallen substantially. फिर बालक 31/12/2017 हो गया. 31/12/2017 पे रीसेट होगा. रीसेट होने पे क्या रेट आएगा? 4%. फ्लोर के स्ट्राइक पे आ गया है और उसका सेटलमेंट कब होगा? 36/2018. फ्लोर के स्ट्राइक पे आया, इट्स नॉट गोन बिलो इट, सो वी आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग एज द सेलर ऑफ द फ्लोर, राइट? 36/2018. $4.5% के हिसाब से हमको पे करना है. £2,23,151. कुछ भी एक्टिवेट नहीं हुआ, करेक्ट? And our interest is going down. Nice position to be in, right? As a borrower. Next, फिर 36/2018 पे नया रीसेट रेट आएगा 3.75, which will be applicable from 36/2018 to 31/12/2018 for the next 6 months. 3.75 would be applicable. I'm telling it time and again because I want it to be etched properly, the understanding, right? This time floor will get activated very much because we are the sellers of the floor. Investor is losing wealth. We have promised nothing below 4% to him, so the rest we have to compensate for, right?
पहले अपन को कितना पे करना है 375 प्लस 0.5 Our interest payout is continuously decreasing because of the fall in rates. 247 कैप एक्टिवेट होगा नहीं होगा भाई, हम लोग को एकदम सस्ते में तो मिल रहा है. फ्लोर होगा, यस होगा. कितना वी हैव टू पे? 0.25%. $12,603. Is it an outflow? Yes. We are the sellers of the floor, so we have to have this outflow. That's 2,26,850 pounds. यहां अपन क्या देखते हैं, उसीलिए मैं बोल रहा था कि it was just worthy buying a cap. Why they went into selling a floor? क्योंकि हमारा कॉस्ट एकदम कम ही रहता है. It would have remained 2,14,247 had we not sold a floor and created that so-called collar. ठीक है, तो 226,850. ठीक है, यहाँ अगर आप हालत देखो, हमारा कॉस्ट एस्केलेट हो जा रहा है. Why? Because we sold a floor. On 31/12/2018, the last reset would happen at 4.25%, which would be settled on 30/6/2019. कितना बालक? 4.25. कुछ एक्टिवेट नहीं होगा. Nothing will get exercised. To pay 4.75%. $235,548. It's 2,35,548 pounds. No cap, no floor. Total interest payout it's 16,62,397 pounds total interest that we have paid, right? Average overall effective rate of interest per annum. So total we have paid on 10 million, यानी 1 करोड़ पाउंड. Right? This is for the entire period. Entire period, if you notice. कितने days है? Total number of days कितना है? 1,095 days. I've asked for us for a year, so into 365 as we considered, 1,095 days total. ईयर में स्केल हो गया, सीधी सी बात.
5.541%. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो और दूसरा मेरा सबसे बड़ा टेक्निकल इशू ये है, चलो आपने फ्लोर बेचा, कैप खरीदा, आपकी मर्जी, योर लाइफ योर रूल्स, लेकिन देयर आर सर्टेन रूल्स विच आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो ये जो डेट्स हैं वो आपको ऊपर डालनी है, एक्चुअली दैट इज हाउ इट शुड हैव बीन। एक नोट दे देता हूं, फर्स्ट जो है वो रीसेट नहीं है, वो इनिशियल डेट होनी चाहिए थी 1 जुलाई, एंड इट शुड हैव कैरीड 6% इंटरेस्ट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2016 टू 31 December 2016। ये मेरा सजेशन है, शुड बी एडजस्टेड बैकवर्ड बाय 6 months, तो ये सब ठीक बैठ जाएगा, ठीक है। These are more than reset date, these are settlement dates, then it would make sense, right? Reset happened 6 months before, and उसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो चीज है, एक बार फ्लोर बेचा कोई प्रॉब्लम नहीं है बोरोवर होकर भी, लेकिन ये कोई जरूरत नहीं था ऐसे करने का। दिस इज नॉट द करेक्ट प्रेजेंटेशन, क्योंकि जब डेट आती है इंटरेस्ट आर प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया था, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। डन। तो मैंने स्टार्टिंग में इसके ऊपर बहुत लेक्चर दिया, सो आई डोंट वांट टू रिपीट। सो दिस इज आवर सम ओवर हियर, वेरी नाइस वन, राइट, एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट फॉल्स आउट टू बी 5.541% पर एनम। चलिए आगे पढ़ते हुए